Hello friends, in previous video we have discussed layout and design of a kitchen. That includes working triangle, traffic flow, door swing, planning an island for storage. While in today's video we will discuss next important steps that is storage and organization. Storage space and organization में सबसे पहले तो कैबिनेट स्पेस को मद्देनजर रखा जाएगा. अपने किचन की स्टोरेज स्पेस का स्केच बनाइए और डिशेस, पॉट्स, पैन्स वगैरह के लिए सफिशिएंट स्पेस को एलोकेट करें. नेक्स्ट कम्स ड्रॉर ऑर्गेनाइजेशन. ड्रॉर ऑर्गेनाइजेशन के लिए किचन कैबिनेट्स के लिए प्रॉपर ऑर्गेनाइजर्स को चूज़ करें जिनकी आपके किचन को ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू योर नीड्स. बिला ज़रूरत एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजर्स को ऐड करके अपने किचन स्पेस को कम करना और किचन को मैसी करना इज़ अ रॉन्ग थिंग. आफ्टर दैट यू नीड टू डिज़ाइन अ पेंट्री. यू कैन थिंक ऑफ अ वॉक इन पेनेट्री और पेनेट्री कैबिनेट जिसमें आप अपना फ्लावर, फूड, राइस, स्पाइसेस और कुकिंग एसेंशियल्स वगैरह को स्टोर कर सकते हैं. Dear friends, this was part 2 of the video about the things that we need to keep in mind while planning a kitchen. I hope you would have liked the video. Kindly subscribe the channel, like the video and share it with your friends and family who are intending to renovate the kitchen or plan a new kitchen. Stay tuned for the next video, that is part 3 of the things that we need to keep in mind while planning a new kitchen. Till that time, take care of yourself. Allah Hafiz.